Yes, good to see you. Yes. So, Gunika, just random questions that I would want to understand and ask. What was your thought perspective before, after you gave your board exams, or while you were giving your board exams? Were you always willing to do CUET? Were you like, यार पता नहीं मुझे करना है नहीं करना, या फिर क्या thought process था तुम्हारे दिमाग में? तो ये तो आई थिंक सितंबर से ही क्लियर हो गया था कि हम्म सीयूईटी को आई जस्ट कांट एस्केप, देयर नो एस्केप हम्म फॉर मी, आई हैव टू गिव इट। हम्म तो सीयूईटी तो देना ही था, ये तो और पता ही ये था। पता कैसे चला? वॉज इट बिकॉज ऑफ योर सीनियर्स और बिकॉज यू आर अवेयर एंड यू आर ऑलरेडी ऑन इट कि यार मुझे देखना है कि कहाँ कहाँ मेरा करियर हो सकता है आफ्टर 12th? या एग्जैक्टली, बिकॉज फर्स्टली बीइंग फ्रॉम कॉमर्स, डीयू इज हम्म वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, मतलब एंड मोस्ट प्रोस्पेक्टिव करियर ऑप्शन जो हो सकता है आई थिंक। हम्म तो एंड सिंस आई गॉट टू नो कि डीयू का एडमिशन इज थ्रू सीयूईटी, सो इट वाज अबंडेंटली क्लियर कि वो तो देना ही है। All right. And were you scared? Were you like confident that I'll be able to crack this? What were the things that were going in your mind when you were not really into preparation of CUET, but you heard about it कि CUET करके एक टेस्ट है? Then it was more like एकदम स्टार्टिंग में यही नहीं पता था आई बी एबल टू क्रैक इट और नॉट, बट इट वाज जस्ट कि होल पैटर्न वाज वेरी न्यू। अभी तक स्कूल हम्म में वी वर जस्ट गिविंग रिटन एग्जाम्स एंड हम्म सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इतना एमसीक्यूज के प्रैक्टिस में नहीं था। दिस होल नेगेटिव मार्किंग थिंग ये कभी हुआ नहीं Very है, true. सीबीएसई डजंट हैव। True. एंड ऑफ कोर्स अभी तो ट्वेल्थ में ही थे, तो ना कभी कोई हम्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सपीरियंस हम्म था ना किसी का था। तो मोर देन एवरीथिंग द होल सिस्टम वाज वेरी न्यू। सबसे पहले तो उसको हम्म समझना कि इट्स इम्पोर्टेंट क्या अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं करना, क्या प्रायोरिटाइज हम्म करना है, क्या सब्जेक्ट को, दैट वाज सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट। So that awareness and education was something that you are saying is या something that you were scared about, or you're at least या not aware of. तो वो तुम्हें पहले अपने या आप आई को वाज एजुकेट नॉट करना था. अवेयर ऑफ हम्म कि मतलब मेरे को पता था बिफोर लाइक अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या करना है फॉर एग्जाम, देयर हम्म वाज अ लॉट मोर कि क्या पढ़ना है एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, व्हाट शुड ट्रू. बी माय अप्रोच टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स एंड सब हम्म कुछ। And what do you think was helpful in this entire process of you understanding it? Was the process that was clear given by NTA very clear, or do you think कि उसमें बच्चों को कुछ cautious steps लेने चाहिए so that they understand everything very well? फिर आई थिंक सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज सिलेबस समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म क्योंकि आई डोंट थिंक एनटीए मेक्स इट एनी क्लियर कि क्या आएगा कोर्स में, एंड हम्म इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ ट्वेल्थ ग्रेड का सिलेबस। True. देयर आर अ लॉट True. मोर एडिशनल थिंग दैट यू हैव टू डू, हम्म especially in English, क्योंकि English हम्म was nowhere near what we've done in 12th. English हम्म was all about what we've done in our childhood, 6th 7th 8th में जो बेसिक लैंग्वेज पढ़ाते हैं, सारा वो टॉपिक्स थे। Very true. Very true. तो ये तो आई वुडेंट से दैट एनटीए मेक्स इट क्लियर कि क्या आने वाला है। ये इंग्लिश तो स्पेशली बहुत एम्बिगुअस था लास्ट तक। हम्म यू वर यू गाइस वर द पीपल जिन्होंने, आई स्टिल रिमेम्बर यू हैड पोस्टेड दैट बिग मैसेज कि ये टॉपिक्स आए हैं इंग्लिश के, एंड उसके बाद हम्म आई हैड टू प्रिपेयर देम क्योंकि वो एकदम न्यू थे, हम्म हमने वेरी पढ़ा ट्रू. तो वो आया ही नहीं। बहुत ही अलग पैटर्न था, एकदम से पता चला यार ग्रामर इतनी ज्यादा बढ़ या गई है. हम्म English में we were more focused on unseen comprehensions and 10 questions each and vocabulary more। वो सब तो था ही नहीं, vocabulary भी there was very little vocabulary, 2 3 हम्म questions, that too very basic। I would हम्म not say that it was very high level vocabulary, and I had मतलब it was fine। Someone with basic English knowledge जो daily पढ़ता है, us being in नीजा मोती जितना हमने सीखा है, उससे हम कर सकते थे वो। हम्म बट वैसे would you say the paper was difficult, or do you think paper was not difficult? The paper was not difficult, but some questions were tricky, some that we thought that we hear in our daily lives. Like हम्म I'll tell you, one question was there in the paper, a la carte ka matlab, हम्म and that is the term I so frequently used in every time we go to a restaurant we say that, but paper mein I Exactly. couldn't, matlab, I had to leave that question eventually But क्योंकि मेरे को how? आया ही नहीं। It was such an I easy know, question. very easy question, but the options were so confusing, and Hmm. मैं वही बैठ के I was thinking this is something I've used हमेशा, this is what I know। True.
A lot of students marked it in the cart. I was very surprised. How can you mark it in the cart? आई हैड टू गूगल इट घर आके कि एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन, क्योंकि वो Hmm. ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग थे. Hmm. So I would not say True. it was difficult. Few questions were easy. Hmm. Unseen Hmm. comprehensions, touchwood, were easier than I had expected them to be. Hmm. The paper was not tricky. Few questions ऐसे थे जो ambiguous थे, but ठीक है. All right. Acha, so let's say there's a very bright student of class 12, or let's say an above average student of class 12. Do you think that student without any special preparation or without any special help or without any special, extra effort can prepare for CUET smoothly? Or do you think even after being a good student and having good board exams, you need that extra edge to be prepared for CUET? Then I think that, there needs to be an extra effort. You have to be affiliated to some coaching or something, not just with the syllabus, but there are a lot of things that you guys told us about. पूरा system के बारे में कैसे forms भरने, ये सब नहीं तो बाकी जैसे एग्जाम बाकी यूनिवर्सिटीज में भी जेन्युइनली स्ट्रगल कहीं कहीं तो, Hmm. क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनके फॉर्म्स में इतनी सारी चीजें होती हैं. सीयूईटी के अपडेट्स ही जो एनटीए से बहुत लेट आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वी ऑल नो. Hmm. मतलब मिसमैनेजमेंट तो है ही उनके एंड पे थोड़ा सा, जैसे दे Hmm. मेड इट वेरी क्लियर. तो उस सब से अपडेटेड रहने के लिए आई थिंक किसी और की जरूरत होती है. यू कैन नॉट डू दैट ऑल बाय योरसेल्फ. Hmm. All right. And what special tips and tricks would you want to give with respect to the preparation? Let's say if there is a class 11th or a class 12th student, to be honest, अगर वो बच्चा अभी क्लास 12th में गया है, so what do you think how that student should prepare himself or herself for boards as well as COT side by side? So for boards तो like I was from commerce, the subject I had, ये मेरे को Hmm. काफी टाइमली रियलाइज हो गया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई नीड टू फोकस ऑन अकाउंट्स और मैथ्स, क्योंकि द सिलेबस इज अ लॉट. अकाउंट्स की वी हैड 3 big books and if I start them in December, I cannot be done with them by March. वो मेरे को Hmm. पहले से करके ही रखना था. Hmm. तो अकाउंट्स और मैथ्स का तो प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, बिकॉज द सिलेबस इज अ लॉट, वो नहीं होता है मोमेंट पे. So, BST is more about just learning and being thorough with everything जो NCERT में given है. If hmm. you know the NCERT well, you can easily crack a BST paper. Hmm. BST is all about NCERT. Hmm. तो BST में तो you have to be very thorough with and you have to actually rote learn this. That is how CBSE is. You Hmm. have to learn it. NCRT by the line. It has to be like You this in have to BST. learn it by the line. Hmm. For MCQ CUET में तो क्योंकि it was all about MCQs and BST में especially you have to be very thorough with every line कि वो Hmm. किस हेडिंग के अंदर आ रही. बहुत सिमिलर हेडिंग्स हैं, वो सेम हेडिंग्स हर चैप्टर में है, सेम टॉपिक्स हैं, बस हर So, चैप्टर के हिसाब से दे आर जस्ट मोल्डिंग इट टू डिफरेंट थिंग्स. तो आपको hmm. पता होने चाहिए वो कीवर्ड्स कि वो कौन से चैप्टर की कौन सी हेडिंग में आ रहे हैं. एंड दैट ओनली Exactly. कम्स आफ्टर यू रेड द एनसीईआरटी Hmm. Multiple times. मल्टीपल टाइम्स. एवरी मतलब हर एग्जाम से 1-2 बार पहले तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं Sure. है. नहीं याद होता है नहीं तो. एंड उसमें भी वी हैड ऑलमोस्ट 12 chapters, बिग 12 chapters. Hmm. तो नहीं पढ़ोगे तो नहीं याद हो पाएगा वो And तो. what about time? How do you split your time? And is there a specific way? Let's say that only till Jan I'm going to be very focused on my board. After that, I'm going to start CUET. Should I do it side by side? What should a student exactly do? I'd say what I did, like we started in September with you guys. So September to January, I think it was sufficient, Hmm. those 4-5 months that I focused on CUET and both side by side, not them ignoring boards also, but yeah, both go hand in hand. 2 months you need only for boards. Hmm. मतलब you needed for sample papers, for everything the school asks you to do. There are a lot of things apart from the books that you just have to do. फिर उसमें practicals भी होते हैं, बहुत कुछ होता है. तो लास्ट के 2 महीने February March you have to devote yourself to the boards, क्योंकि वो भी important है, बहुत important है. Hmm. तो आप पहले से लाइक सेशन के स्टार्टिंग में आई थिंक अगर जुलाई अगस्त में इफ दे स्टार्ट एनीबडी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी विद बेसिक जीटी एंड इंग्लिश, Hmm. एंड इंग्लिश में भी कि अब उनको पता है क्या करना है, Hmm. नॉट जस्ट डूइंग True. रैंडम थिंग्स, दे गो Hmm. थोड़ा उनका अप्रोच ढंग से कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं. Hmm. वोकैबुलरी जैसे
I still remember Paresh sir had told us way back, but if I had started Word Power Made Easy in September, yeah, मतलब हम्म it would have been easier for me. It would have certainly हम्म been easier for me. तो अगर हम्म थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके चले तो हो सकता है. अभी हम्म 4-5 months they prepare for CUET and then they drop it. It's हम्म okay क्योंकि ट्रू जो बोर्ड्स में पढ़ लो वो इवेंचुअली काम आपके CUET में ही आएगा. सिलेबस सेम है. ट्रू बाकी वेरी ट्रू एडिशनल थिंग्स यू कवर अप. वेरी ट्रू वेरी ट्रू एंड इफ गुड समवन रियली वांट्स टू प्रिपेयर अ लॉट तो अभी जैसे हमने माइक्रो एंड में करी थी वो माइक्रो भी अभी कर ले, दिसंबर तक कर हम्म ली मे बी. एक बार दे जस्ट बी थॉरो एंड फिर अप्रैल मई में दे कैन रिवाइज क्योंकि आई थिंक हाँ बट आई टाइमिंग सब थिंक सेम. timing the same होगा but I think what is also going to happen is for students who are not very strong academically or are scoring around 90% and less than 95%, I think they might have to put an extra effort क्योंकि उनके लिए it दे might not be हैव a very टू. easy यार ship to sail. माइट नॉट बी अ वेरी इजी जॉब क्योंकि बोर्ड्स में भी बहुत प्रेशर है. मोर देन हम्म एवरी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर द स्कूल पुट्स, मतलब होता है. एवरीवन एक्सपेक्ट्स अ लॉट. स्कूल में सब बोलते हैं ये भी कर लो, ये भी कर लो, बाय दिस बुक, डू दिस सैम्पल पेपर. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर कि हम्म सब कुछ करना है, पढ़ना भी है, सीयूईटी भी है. पता है कि वो ये सबसे डीमोटिवेटिंग आई थिंक यही था कि बोर्ड्स कितना भी पढ़ लो इट डज नॉट एंड देयर. देयर आर 2 more months जिसमें true. सेम चीज दोबारा दोबारा पढ़नी है. I agree and same books you have to keep on seeing for the next 2 months. लास्ट तक ये मतलब हम बोर्ड्स तक हमें होता था कि वी आर सो अनॉयड, सेम बुक सेम चीज बार बार Mhm. बार बार. कितना भी कर लो खुद को लगता है कि इफ आई जस्ट रीड इट 1 more time आई बी बेटर विद इट. बट Yes, करते yes, टाइम लगता yes. है कि आई जस्ट डन सो मेनी टाइम्स. Hmm. Very तो true. वो But I think at the end it's worthwhile. So I think couple of more इट्स ऑफ days. कोर्स वर्थ. So देयर इज नो yes. अदर ऑप्शन. इट हैज टू बी Hmm. वर्थ. Okay, the last couple of few things that you would want to mention about, what helped you, what worked for you, what other things that kids should keep in mind, apart from, specific schedule of how do they prepare during class 12. Anything else that you want to add? एनीथिंग एल्स? मेनली तो सब्जेक्ट्स की आपको पता होना चाहिए आपको कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है. ये नहीं होना चाहिए Hmm. कि आई जस्ट डू ऑल द सब्जेक्ट्स इन 1 day. इट जस्ट डज नॉट वर्क एंड इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल क्योंकि एवरी किड goes to a tuition, some tuition for every subject apart from school, which is time consuming. Of course you cannot think I'll do 5 subjects in 1 day and I'll be through. वो नहीं हो पाता कितना भी सोच लो. ये पता है, बचपन से सबको पता चल गया नहीं हो पाएगा वो. तो जस्ट प्लान होना चाहिए कि क्या करना है सब्जेक्ट वाइज. Hmm. प्लान समथिंग लिटिल फॉर अ डे बट डू समथिंग प्रोडक्टिव. ये नहीं होना चाहिए कि एंड में कुछ भी नहीं करा सब कुछ करने के चक्कर Hmm. में. Hmm. Which is fair. Okay. I think one last thing which I would want to ask. So, what are the courses that you're looking at? So आई एम लुकिंग फॉर इको ऑनर्स, Hmm. बीकॉम ऑनर्स, Hmm. स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स एंड बीएमएस. ये Okay. टॉप 4 प्रायोरिटी कोर्सेज है बेसिकली. Okay. And what is going on in your mind? What is the preference with respect to colleges and courses? Let's say if you have to तो map out कॉलेज top five or top 10. तो कॉलेजेस तो एसआरसीसी ऑफ कोर्स टॉप से Hmm. रैंक. एंड कोई भी कोर्स मिल जाए मेरे को आई गो देयर. Why Either not eco Stephens honors, or LSR? just Why as SRCC? because it is SRCC, there is just this name SRCC. Hmm. LSR I can't go. It's in South Campus. Apart from all the Hmm. colleges, that's a factor. But okay, if I get in, I'll not reject it because of this. You want to be a part of the campus as well and enjoy college life. Of तो जरूरी है. course, बहुत जरूरी है. Good, but I hope you have filled Stephens का पूरा process because it is happening separately. It will be happening Yep. separately. Is it? हाँ, I'll ड्यूक से थोड़ा अलग I'll look. होता है तो वो ध्यान रखना. ठीक है. I'll look for it a bit. ओके चलो गुड लवली गुड इंटरैक्टिंग. Hmm. ठीक है Yeah. बाकी टेक केयर. आई थिंक द रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम वेरी सून तो फिर वील टॉक सून. Yes. Hopefully. एक बार एंड बट आ अब जाए then टेंशन वेंशन तो मतलब अब तो हो गया जो होना था. अब तो हो गए ठीक है. आई एम हैप्पी हो गया एंड फाइन. अच्छे से हो गया. चलो गुड. क्या किया फिर लास्ट 10-20 days? कुछ भी नहीं. ओनली रिलैक्स. चलो ये भी अच्छा लिटरली है. नथिंग. अब लास्ट
एक 1.5 साल से एटलीस्ट तुम लगे हुए हो, पढ़ो 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 पढ़ो। सिर्फ तो अब लगे हुए वो दिसंबर से तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं, क्योंकि दिसंबर में प्री हम्म बोर्ड्स, फिर जनवरी में प्री बोर्ड्स, फरवरी से तो बोर्ड्स ही थे। February March went in that, then अप्रैल में ऑल्सो, हम्म ठीक है अप्रैल में थोड़ा सा इंजॉय कर लिया था। हम्म स्टार्टिंग के 15 डेज हम बहुत रिलैक्स थे। हम्म। बट फिर हाँ, वो बट रिदम में आ ही गए थे कि भाई प्रिपेयर करना है, उसके फिर लिए अब वो क्रैक देन वी करना हैड है यार। टू गेट बैक इन ट्रैक, हम्म। क्योंकि एवरीवन चलो एल्स को गुड। स्टार्टिंग तो लगता था कि खुद ही पढ़ना ही है। बट गुड, चलो लवली। चलो हैव फन, स्पीक वेरी सून। ठीक है, बाय यस, बाय, टेक थैंक केयर। यू, बाय बाय। बाय, थैंक यू, बाय।